Assalamu alaikum, dear students. Today we start our next topic, that is maximizing use of resources. I hope you understand the factors that affect the utilization of resources. Now we start today's lecture with maximizing use of resources. कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. सो अंडर दिस देयर आर फोर फैक्टर्स that maximize utilization of resources. One is the increasing supply of resources. Another one is knowing alternate use, increasing utility and expanding appreciation, and the last one is the balancing choices among resources. Now first we discuss first factor, that is increasing supply of resources. Dear students, you know that family जो है they utilize their resources in order to meet the needs and demands of the daily life. ठीक है. जो फैमिली है उसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं. दे यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डेली डिमांड्स. दैट इज वाई जो रिसोर्सेज है वी शुड ट्रीट देम एज लिमिटेड, एज प्रेशियस. ठीक है. एज यू नो दैट सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, प्रेशियस. सो हमें ऐसे ही ट्रीट करना है बिकॉज हमें माइंड में रखना है वी हैव टू अचीव द गोल with limited and precious resource. So we should maintain the balance between utilization of resources. ठीक है. So when we use one or two resources, ठीक है, जब आप कोई गोल फ्रेम करते हैं, that goal get not achieved with only one or two resources. ठीक है. As you know that one or two resources will not accomplish goals with good results. So you need different types of resources in order to achieve the goal in a good way. ठीक है. That is why use of number of resources and increasing the supply of resources is very important. ठीक है. The family member or the head of the family should have knowledge, money, time, interest, energy in performing a task. ठीक है. जब आप कुछ प्लान करते हैं किसी फैमिली मेंबर में, आप कोई गोल प्लान करते हैं, उस गोल को अचीव के लिए सिर्फ आप दो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हैं, हमें यूज करने हैं बहुत सारे रिसोर्सेज को. बट हमें ये माइंड में रखना है दैट रिसोर्सेज आर प्रेशियस एंड लिमिटेड. सो उनको हमें ऐसे बैलेंस्ड वे में यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल इन ए बेटर रिजल्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूंगी कोई हाउस होल्ड टास्क है, वी कैन दैट टास्क सिंपलीफाइड and additional resources like using household equipment, taking help from other family member, using plan technique in an economical manner. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक गोल प्लान किया, उस गोल को अचीव के लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है. सो आपको माइंड में रखना है दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर प्रेशियस. आप हर एक मेंबर से हेल्प लेंगे जब सारे मेंबर्स उसमें काम करेंगे, रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में आप यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. आप एक प्लान, प्रॉपर प्लान बनाएंगे, उस प्लान पे चलेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आ जाएगा.
ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज एक गोल को अचीव के लिए आप सिर्फ एक रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं, यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बट यू शुड हैव नॉलेज दैट हाउ कैन वी बैलेंस among the different resources, as you know that resources are limited and precious. ठीक है, that is why you need help from other family members, you need proper planner technique and economical manner. You plan your goal as in economical manner, then you get the better result. ठीक है, so this is the first factor which helps you to maximize use of resources. ठीक है, another one is the knowing alternate use. जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, as you know that any type of problem, when we solve that problem there are alternative solutions in order to solve that problem. ठीक है, we always make alternative solution to any problem, because if one solution will not get success then we apply another solution. ठीक है, जब आप कोई काम करना है आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन रखते हैं, अगर एक प्लान सक्सेस नहीं होता है तो हम दूसरा सोल्यूशन देखते हैं, सो अगर उससे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है तो हम थर्ड सोल्यूशन अप्लाई करते हैं. सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन. ठीक है, बिकॉज हर एक ऑल्टरनेटिव को अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं. एवरी ऑल्टरनेटिव हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और प्रॉस एंड कॉन्स. ठीक है, सो द बेस्ट ऑल्टरनेट इज देन चूजन व्हेन यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, दैट इज व्हाई हेड ऑफ द फैमिली शुड हैव नॉलेज अबाउट द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. Because when resources can be used in number of ways, that resource becomes all the more valuable. जब हम एक रिसोर्स को डिफरेंट फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में उसका सक्सेस हमें मिल जाता है. ठीक है, सो देन ओनली यू गेट बेटर रिजल्ट. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हाउसवाइफ wants to save money, she has to substitute it with time and energy with a view to complete the work. ठीक है, अगर एक हाउस होल्ड वाइफ चाहती है कि वो मनी सेव करना चाहती है तो वो उस गोल को ऐसे अचीव करती है, वहां पे वो टाइम और एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज करती है, so उसकी मनी सेव हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई काम करना है जहाँ पे उसको गैजेट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, बट दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज वेरी एक्सपेंसिव and in another way she wants to save the money. So वहां पे वो मैनुअली वो काम करती है. So जब वो मैनुअली काम करती है उसका टाइम और एनर्जी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बट दूसरी साइड से उसकी मनी सेव हो जाती है. दिस इज द ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज increasing utility and expanding appreciation. ठीक है, as you know that money and time are two resources which can be used in different ways. ठीक है, हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है सो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, आप एक छोटी सी बाउल ले लो, उस बाउल को आप डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आके आप एक ग्लास की बाउल ले जाओ, उसमें आप वेजिटेबल भी सर्व कर सकते हैं, उसमें आप फ्रूट सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, या उसको आप एज ए फ्लावर वास यूज कर सकते हैं. ठीक है, so to gain satisfaction and to use resources economically, one should use materials which can be used in many ways. ठीक है, सो हमें रिसोर्सेज को या मटेरियल्स को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए जहां पे हमें ज्यादा अप्रिसिएशन, हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए और हम उन मटेरियल्स को डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल गिलास बाउल की.
आप उस ग्लास बाउल को सम टाइम आप उसको वेजिटेबल सूप में उसको सर्व कर सकते हैं. सम टाइम यू यूज दैट वेजिटेबल ग्लास बाउल फॉर फ्रूट सैलेड, या उसको आप किसी टाइम पे एज अ वास यूज कर सकते हैं. ठीक है. So a family should select material and goods like furniture which can be used for money purposes. So ये फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका. ये हम कह सकते हैं कि फैमिली होती है वो गुड फैमिली हम कह सकते हैं, या मैनेजर फैमिली हम कह सकते हैं, जब वो किसी मटेरियल या फर्नीचर को ऐसे चूज कर सके जिसमें मल्टीपर्पज यूज होगा. ठीक है. तब जाके आप रिसोर्सेज को सेव कर सकती है. बिकॉज जब एक ही मटेरियल हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं तो वहां पे जो अदर मटेरियल या अदर रिसोर्स यूटिलाइज हो जाता वो सेव हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज बेटर इन ऑर्डर टू सेव द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यू शुड चूज मटेरियल और फर्नीचर फॉर अ फैमिली इन सच अ वे विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल्टरनेटिव sources. ठीक है. Then you get the maximum use of resources. Is it clear? Because जब आप किसी एक मटेरियल या किसी एक यूटेंसिल को डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे आप रिसोर्सेज को सेव करेंगे. Is it clear? The last one is the balancing choices among resources. We should maintain the balance among resources. As you know that our desires are unlimited. ठीक है. अगर हम अपनी फैमिली की बात करेंगे, there are different family members and we have unlimited desires, needs, wants, goals, but we should maintain the limit of our desires as per the availability of resources. ठीक है. We should maintain balanced life. ठीक है. One should balance one's desires, interests and wants as per the availability of resources. हमें सबको अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं, चाहे वो लो सोशो फैमिली इनकम से बिलोंग करता है और फ्रॉम हाई सोशो इकोनॉमिक फैमिली और मिडिल सोशो इकोनॉमिक फैमिली. बट वी शुड मेंटेन द बैलेंस एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. सो हम फिर देखते हैं मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, उसी के बेसिस पे मैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे मैं अपने डिजायर्स को फिर लिमिट करती हूँ. इज इट क्लियर? सो फॉर दिस, for balancing among resources, resources should be used in a balanced manner only. ठीक है. So good and efficient efforts made to achieve fruitful results develop self-control, tolerance and positive outlook in one's life. ठीक है. जब हम अपने डिमांड्स गोल्स को लिमिट करते हैं, जब हम उनको बैलेंस करते हैं, then you utilize your limited resource in a balanced manner and finally you get fruitful result, you get tolerance level and you get positive outlook. ठीक है. As you know that resources जो है their purpose is to achieve the goal. Is it clear? So we have to maintain the balance between our choice and our resources. Because अगर आप अपनी डिमांड्स अपने डिजायर्स को हाई रखेंगे, यहाँ से रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है. ठीक है. सो वहां पे बैलेंस नहीं हो जाएगा, आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं. यहाँ से रिसोर्सेज आपको लिमिटेड है एंड यू नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट योर डिजायर जो है वो बहुत हाई है. So there is impossibility of achieving that desires. So it is better to maintain the balance between your desires, interests, goals and availability of resources. ठीक है. Then you get the satisfaction, then you get the good result, then you get the proper satisfaction या positive result from the utilization of resources. ठीक है. सो ये सारी 4 फैक्टर्स है जो हाउस वाइफ जो होती है, वेल मैनेजड हाउस होल्ड वर्कर जो होती है,
उसको ये सब पता होनी चाहिए कि मुझे कैसे सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है, बिकॉज एज पर द गोल और एज पर द डिमांड द रिसोर्सेज, द नीड ऑफ द रिसोर्सेज इज needed. ठीक है, so she should have knowledge about the alternative use, how can we maintain the balance between the desire and the use of resources. So these are the four factors or four steps by which you can maximize your use of resources. So this was all about the today's lecture. Thank you.